Hello everyone, welcome back to our channel MTV EduHub. In the previous lecture we discussed about the discovery of proton and neutron. If you haven't watched the video, you can just go through it. It is present in the channel. Today our topic of discussion is Thompson model of atom. So without any further delay, let's get started. So till now we discussed the discovery of proton, neutron, electron and even their properties. Till now we know that an atom consists of electrons, protons and neutrons, but we don't know how these subatomic particles are arranged in an atom. So what happened is that many scientists came forward with some atomic models. बहुत सारे साइंटिस्ट ने कई सारे एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए. तो उनमें से एक बहुत फेमस एटॉमिक मॉडल है, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. तो थॉमसन was a very famous scientist. He was also awarded Nobel Prize for Physics in 1906. ये एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने 1898 में प्रपोज किया था. जे थॉमसन ने क्या प्रपोज किया? जे थॉमसन ही प्रपोज दैट दिस पॉजिटिवली चार्ज मैटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होल ओवर द एटम. मतलब ये एक एटम पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज मैटर से भरा हुआ है. ठीक है. तो व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन्स? These electrons are arranged in such a manner to give the most stable electrostatic arrangement. ठीक है. पॉजिटिवली चार्ज मैटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है. उस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड है कि इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज आपस में कैंसिल होकर एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट दे. थॉमसन ने ये भी प्रपोज किया कि जो एटम का मास है वो कोई एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. इट इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन सिंगल पॉइंट, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होल ओवर द एटम. ठीक है. मतलब इसका जो मास है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कोई एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. ऑल्सो थॉमसन एटॉमिक मॉडल रिजेंबल्स दैट ऑफ अ वाटरमेलन. लाइक the edible part of the watermelon is considered to be the positive charge and the seeds of the watermelon is considered to be the electrons which are embedded in the atom. Also it is compared with a plum pudding where the dry fruits are compared to the electrons and the rest of the part is considered to be the positive charge uniformly distributed in an atom. Let's discuss a little bit about the limitations of Thompson atomic model. Thompson atomic model के कुछ limitations है. Like it wasn't able to explain firstly that how the positive charge holds on the electron inside the atom. उन्होंने ये तो बता दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे अरेंज है, बट for this arrangement there must be some forces to bind these electrons and protons inside the atom. But थॉमसन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया अपने मॉडल में. So it failed to explain the atomic stability. Now second point is the theory didn't mention anything about the nucleus. उन्होंने ना न्यूक्लियस की बात की ना कोई न्यूट्रॉन्स की बात की. So it also doesn't mention anything about that our third subatomic particle, that is neutrons. The third point is it was unable to explain the scattering experiment of Rutherford. So this point will get clear when we will read about the Rutherford model of atom in our next lecture. So this is all about limitations of Thompson atomic model. Coming to the conclusion of today's lecture, Thompson atomic model was not properly correct, but it created a base for other atomic models. मतलब कि इस मॉडल के बाद ही सारे एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज हुए थे. तो इट इज़ नॉट प्रॉपरली करेक्ट. ये बहुत ही करेक्ट एटॉमिक मॉडल नहीं था, बट ऑल्दो इट वाज अ स्टार्ट एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल टिल टुडे. सो आई होप today's lecture is clear for you. In the next lecture we will discuss Rutherford model of atom. I would also like to request you all to kindly access the playlist as it would be more convenient for you to go through the videos. Thanks for watching the video. If you have any queries, you can ask in the comment section below.
Also, I have provided the lecture notes in the description box.